Business Communication Lecture 4. Unclear or confusing message or unorganized message. In unclear message, when the communication lack of knowledge or clarity making the to understand the intent meaning. So the meaning cannot be understood. Causes are vague languages, ambiguous, okay, lack of structure, poor organization, insufficient information, failing to provide the enough information, assumptions, and complex language. Now we'll see the with examples. वेग लैंग्वेजेस, वेग लैंग्वेज में क्या आता है, जो शिपिंग है, कस्टमर का नाम है सलीम लाला, वो लिखता है कि पातशाह भाई के दुकान पे आके पूछ लो सलीम लाला किधर रहते, सीधा घर तक लाके छोड़ते। तो डिलीवरी बॉय तो सोच रहा है कि पार्सल के साथ उसकी भी डिलीवरी हो जा रही है, और पातशाह भाई अपने बेगम के साथ बिजी रहे तो फिर क्या करते सलीम लाला। तो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज वेग लैंग्वेजेस। assumption, in this crocodiles do not swim here, तो आप assumption कर लो कि crocodile यहाँ पे नहीं तैरते, या यहाँ पे crocodile है, आप मत तैरना। So you can make your assumption and you can take your own risk. So this is an very complex sentence, has a double meaning, positive as well as negative. Then insufficient information, customize your own. If we want to customize, then why we should order him? So he has not provided the complete information. Lack of structure, welcome to learn Hindi through English within a short period, as well as to know about India and its culture. तो ये इतना अनऑर्गेनाइज लैक ऑफ स्ट्रक्चर है कि उसे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। ठीक है।